फेसबुक अपडेट्स यू कांट मिस। तो हम आपको बताते हैं कि फेसबुक ने जुलाई 2020 में कुछ नया अनाउंस किया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। आप वो बड़ी आसानी से मैसेंजर के ज़रिए लाइव जा सकते हैं, अपने रूम्स बना सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले जूम ऐप और सारी ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। वो फेसबुक ने हमारे लिए फेसबुक पर ही अवेलेबल करा दिया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यू कैन क्रिएट रूम्स ऑन फेसबुक मैसेंजर विच अलाउ यू टू इनवाइट अप टू 50 पीपल्स इनटू व्हाट्स एसेंशियल ए चैट रूम। आपको जानकर हैरानी होगी कि जूम जो था उस पर हम 30 लोग ही एक बार में ग्रुप में ले सकते थे, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था और वो पेड भी था। लेकिन यहाँ फेसबुक ने इसको बिल्कुल अपने यूजर्स के लिए दिया है। दिस फीचर रोल्ड our relativity recently and how we are gaining a new extension of it. This is an interactive feature and it's designed to be a joinable video call. Any invited user are able to join the call even if they don't have a Facebook account, as long as they have access to the messenger room. You can keep this broadcast private, or as a room creator, broadcast the room to your profile page or even a group you run and invite viewers to watch. This is a great feature to use, especially as many people are more physically isolated due to the coronavirus. Your business can use this feature to create engaging multi-person live videos that your audience will respond to in real time. Since live videos has significantly higher engagement than most other types of content on Facebook, this is a great feature that you should test out. और जो दूसरा फीचर्स है जिसकी हम बात करें, वो दिया है इन्होंने न्यू प्राइवेसी सेटिंग एंड मैसेंजर ऐप लॉक. This new Facebook update is all about increasing security for users. It comes with a multi-faceted approach. The first is the app lock feature, which allow you to lock access to the Messenger app even someone else has access to the phone itself. If someone need to borrow your phone to make a call, for example, you can lock the app so that they are not able to see any of your messages even though they are holding your otherwise unlocked phone in their hands. If you are managing a business communications, this particularly important, but it's great news for all users. You need to use feature like Touch ID or face recognition enabled in order to unlock the app. Again, this feature is already available on iOS and will roll out to Android within the next few months, which sort of brings us the second feature that will be coming soon with this update: the ability of gain more control over who is messaging you or calling you on Facebook. Facebook is working on a set of new controls that you can determine who can message or call you directly, which messages are sent to a requests folder, and who is unable to message you at all. These will replace all Instagram's own message control. New options for connecting with business on WhatsApp. आप WhatsApp को भी आप Facebook से जोड़ सकते हैं. Plenty of users will reach out to business on WhatsApp, making it an important platform for brand consider joining. And now there are new features that can make connecting with your customers on this platform easier than ever. For starters, you can feature QR code on your site in a chat on product packing or in store. When user scan these QR codes, they will able to immediately initiate a chat in WhatsApp with your business. और Facebook remove coordinated इन ऑथेंटिकेशन बिहेवियर. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइनल थॉट्स भी ये ला के दे रहा है. अभी तक तो यही है. आगे कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको. फेसबुक में वैसे बहुत कुछ नया आने वाला है.
ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और ये अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं दे रहा है। वाह, थैंक यू। प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब।